मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए let me welcome Dr. Erin Glynn. So हम आप सबका माइक म्यूट है, लेकिन अपने हाथ से हम जोरदार ताली के साथ let me welcome Dr. Erin Glynn. Dr. Erin, a hearty welcome to you. Thank you. Good evening. Good evening. Thank you so much for having me this evening. It's such a pleasure to be here with you. Okay, so Dr. Erin कह रहे कि बहुत-बहुत धन्यवाद. And by the way, Dr. Erin Glynn, इनका ये सबसे पहला सेशन है. I think it's your first session, this Zoom session in University India. I think I'd like to take this opportunity to hearty welcome to our University India session, Dr. Erin Glynn. Thank you. Let's see, I'm also gonna okay, let's get started. So tonight I'm going to be talking about gut health, immunity, and our clear start system. Okay, आज रात मतलब अभी इस सेशन में डॉक्टर एरिन ग्लेन हमारे हमारे जो पाचन तंत्र है, हमारी जो गट है, हमारी इम्यूनिटी है और हमारी क्लियर स्टार्ट के बारे में आज ये हमारे साथ शेयर करेंगे. So you've probably heard us say before that Unicity is a metabolic health company. तो आपने कभी सुना होगा कि यूनिसिटी एक मेटाबॉलिक हेल्थ कंपनी है. Our product solutions are designed to support metabolic health of the entire body. तो हमारा प्रोडक्ट इस तरह से डिजाइन किया गया है कि वो आपकी पूरी बॉडी की मेटाबॉलिक हेल्थ को ध्यान में रख सके. When we talk about metabolic health and metabolism, we're not just talking about one system or one process. तो जब हम इस मेटाबॉलिक हेल्थ के बारे में बात करते हैं तो हम एक सिस्टम और एक प्रोसेस के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं. Metabolism represents the millions of chemical reactions that are happening in the body every minute. तो मेटाबॉलिज्म होता क्या है? मेटाबॉलिज्म एक ऐसा चीज होता है जो आपके बॉडी में हर एक मिनट में जो लाखों हजारों लाखों जो आपके जो रिएक्शंस हो रहे हैं वो है. And in order for our body to perform at its best, all of those reactions have to be working in balance, in harmony with each other. और ये अगर ये सिस्टम अगर सही काम करना है तो ये सभी चीज हमारे बॉडी में सही मात्रा में सही तरीके से काम करना बहुत जरूरी है. So we like to use the analogy of a car when we talk about our bodies and metabolism. तो मैं आपके साथ कुछ कंपैरिजन करना चाहता हूं कि जैसे हम ये गाड़ी और हमारा जो मेटाबॉलिज्म है मैं उसको कंपेयर करके आपको दिखाना चाहता हूं. Just like all of the parts of a car, the engine, the fuel tank, the tires, they all have to be working together in order for the car to run properly. तो ये जैसे हमारी गाड़ी में अलग-अलग पुर्जे होते हैं, जैसे टायर हो गए, इंजन हो गया, अलग-अलग जो पुर्जे होते हैं, वो सारे पुर्जे टुगेदर इकट्ठा काम करना पड़ता है आपको सही ढंग से ताकि आपकी गाड़ी सही ढंग से चले. Today, we'll be looking at how our bodies are like a car and what we can do to keep our body, our machine in optimal health and running smoothly. तो आज हम ये देखेंगे कि हमारी गाड़ी जैसे हमारी बॉडी को हम कहते हैं, हम उसको कैसे हम स्वस्थ और हम अच्छे ढंग से उसको चलाने की हम ये प्रक्रिया आज हम आपको बताएंगे. We can think of the food and the drinks that we put into our bodies as the fuel or like gasoline and the oil that goes into a car. तो हमारी जो खाना है मतलब जैसे जो हम खाते हैं उसको हम जो पेट्रोल डालते हैं, जैसे इन्होंने कहा गैसोलीन, वहाँ पे गैसोलीन आता है, यहाँ पे हम लोग पेट्रोल बोलते हैं, डीजल बोलते हैं, जो गाड़ी में डलता है वो हम हमारे खाने को हम कंपेयर कर सकते हैं. When we use high sugar, low nutrient foods to fuel our bodies, our metabolic engine stops functioning correctly. तो जहाँ पे अगर हमारे बॉडी में अगर ज़्यादा शुगर की मात्रा अगर ज़्यादा हो, हमारे खाने में शुगर की मात्रा अगर ज़्यादा हो तो हमारे इंजन पे काफ़ी लोड पड़ता है, बहुत बार इंजन काम करना बंद कर देता है. And a lack of exercise or physical activity and not cleansing our system regularly is similar to not performing maintenance on a car. तो हम जैसे खाना खाते हैं तो जैसे हम अपनी गाड़ी को या फिर हमारे बॉडी में मतलब हम अगर उसको ढंग से अगर नहीं रखते हैं तो ऐसा
ऐसा हम कंपेयर कर सकते हैं कि हम हमारी गाड़ी को ढंग से मेंटेनेंस नहीं कर रहे हैं, वैसे ही हमारी बॉडी को हम कंपेयर कर सकते हैं। You wouldn't invest in a car or another type of machine and then never perform maintenance on it. तो ऐसा तो नहीं है कि आप कोई गाड़ी खरीदे और कभी भी उस गाड़ी को ध्यान ना रखे या फिर उस गाड़ी को मेंटेन ना करें। This would ruin the machine if you never perform maintenance. तो इसके आपको इससे क्या होगा? इससे आपकी गाड़ी की हालत खराब हो जाएगी और शायद मेंटेनेंस की जो काम है, जो प्रक्रिया है और ज़्यादा हो सकता है। So, why do we put bad fuel into our body, our machine, and not perform routine maintenance and then expect it to run like it should? तो हम खराब जो ये जो फ्यूल कहते हैं, जैसे हम डीजल हो गया या फिर पेट्रोल हो गया या हम कुछ भी चीज़ हम अपने खराब चीज़ जो हम गाड़ी में डालें और हम एक्सपेक्ट करें कि हमारी गाड़ी बहुत अच्छी तरह से चले, जबकि हमारी जो ईंधन जो हम अगर अंदर डालते हैं, वो सही नहीं है, सही क्वालिटी की नहीं है। The answer is it won't run like it should. This is the result of poor metabolic health. तो जैसा हम चाहते हैं ये गाड़ी नहीं चलेगी, तो इसका रिजल्ट ये होगा कि हमारा जो मेटाबॉलिक हेल्थ होगा वो अच्छा नहीं होगा। So, poor metabolic health over time results in disease. And many of these diseases we can help prevent or slow down by just practicing some healthy habits. तो हम अगर हमारे बॉडी को अगर हम ध्यान नहीं रखेंगे और हम इस तरह के अगर चीज खाएंगे तो हमारा जो मेटाबॉलिक हेल्थ है वो खराब होते जाएगा। और जैसी आपको जो हमारी जो मेटाबॉलिक हेल्थ जो हमारी खराब होती जाएगी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बहुत सारे प्रॉब्लम्स, बहुत सारी बीमारी को हम आमंत्रित करते रहेंगे। The recent COVID-19 pandemic has shown us metabolic health and immunity are very strongly linked together. तो अभी ये जो कोविड-19 के टाइम पे बहुत एक अच्छा स्ट्रॉन्ग रिलेशन उभर के आया है, जहाँ पे हम मेटाबॉलिक हेल्थ का जो रिलेशन है हमारे इसके ऊपर में, इम्यूनिटी के ऊपर में, इसका इम्पैक्ट अभी इस कोविड-19 में बहुत उभर के आया हुआ। All of the scientific data is suggesting that people who are less metabolically healthy are at higher risk of hospitalization and death from COVID-19 than are healthy people. तो जब ये एनालिसिस हुआ है, जब ये आपको रिसर्च बाहर निकल के आया, तो ये ऐसा निकल के आया कि जो लोगों का मेटाबॉलिक हेल्थ अगर ठीक नहीं है, उनको बीमारी जो अभी ये जो पेंडेमिक जो कोविड-19 है, ये पकड़ने की बहुत ज़्यादा चांस है और उनको हॉस्पिटलाइजेशन या आईसीयू तक पहुंचने की बहुत चांसेस ज़्यादा है, जिनकी मेटाबॉलिक हेल्थ आपको बहुत खराब है। I am going to apologize because my garbage truck is coming down the street and it might be loud for a little bit, a minute. Not a problem at all. Okay, so when people ask me how Unicity products can help with immunity, although we do have some immune specific products, the most important way we support immunity is through improving metabolic health. तो बहुत सारे लोग आपको पूछते हैं कि भैया यूनिवर्सिटी में ऐसा क्या चीज़ है जो इम्यूनिटी को बढ़ाता है। हम देखा जाए तो इम्यूनिटी को स्पेसिफिकली इम्यूनिटी के लिए हमारे साथ प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन हम जनरली हम यूनिवर्सिटी में हम ये देखते हैं कि हम मेटाबॉलिक हेल्थ जो रूट कॉज है, हम अगर उसको अगर ठीक करें, ऑटोमेटिकली आपका इम्यून सिस्टम बढ़ता है और उसका जो रिस्पॉन्स है, जो फाइटिंग करने का जो रिस्पॉन्स जो स्ट्रेंथ है वो आपको बढ़ता है। When your body is functioning better, when all of your metabolic systems are working as they should, your immune system is stronger. तो बहुत बहुत ही सिंपल है, अगर बॉडी सही ढंग से काम कर रहा है, अगर आप मेटाबॉलिकली बहुत फिट हो, अगर आप मेटाबॉलिक सिस्टम आपका बहुत अच्छा है, तो आपका इम्यून लेवल, आपका इम्यूनिटी बहुत ऊपर रहता है और आपका इम्यूनिटी मतलब बहुत बड़ा हुआ होता है। So let's talk about how we can strengthen all of your body's systems and keep them running optimally. तो हम थोड़ा देख लेते हैं कि हम आपके बॉडी को हम ऑप्टिमली रन करने के लिए हम क्या कर सकते हैं यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट के माध्यम से। What we eat and put into our bodies has a major influence on the health of two major systems. तो हम जो खाना जो खाते हैं
वो हमारे 2 मेजर सिस्टम के ऊपर में बहुत प्रभाव करता है हमारे बॉडी के अंदर में। These are our gastrointestinal system, or often referred to as the gut, and our immune system. तो दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट आपको इम्पैक्ट होता है इससे, जिसको एक को हम कहते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टिनल आपको सिस्टम, और फिर जिसे हम कहते हैं कि गट हेल्थ, दूसरा हो गया इम्यून हेल्थ। These two systems are incredibly intertwined with each other. तो ये जो 2 सिस्टम जो डॉक्टर एरिन ग्लेन ने बताया, जो गट हेल्थ है और जो इम्यून हेल्थ है, एक दूसरे के साथ बहुत स्ट्रांगली जुड़े हुए हैं। That's because 80% of our immune system is in our gut. क्योंकि 80% से ज्यादा जो इम्यून सिस्टम है वो हमारे गट में मौजूद है। So by taking care of our digestive health, we are also supporting immune health. तो बहुत सिंपल है, आप अगर गैस्ट्रो इंटेस्टिनल जो गट हेल्थ जो भी कहते हैं, अगर उसको ध्यान रखते हैं, जो 80% कंट्रीब्यूशन करता है, अगर सही होता है तो आपका इम्यून सिस्टम ऑटोमेटिकली आपको हेल्दी हो जाता है। One of the reasons the gut and the immune system are so intertwined is due to the microbiome. तो ये जो 2 चीज है, जैसे उन्होंने बताया, जो गट हेल्थ और जो इम्यून आपको हेल्थ है, ये बहुत इंटरट्वाइंड है, बहुत एक दूसरे से जुड़े हैं, क्योंकि एक जो इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हम कहते हैं माइक्रोबायोम। Our microbiome are the microorganisms, which are bacteria, fungi, and viruses that live on and in our bodies. तो ये माइक्रोबायोम क्या होता है? ये सारा जो हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, जैसे बैक्टीरिया, फंगाई, वायरसेस, जो हमारे बॉडी में लिव करते हैं। And because these microorganisms in our gut live in such close proximity to our immune cells, they play a major role in the development and functioning of the immune system. तो क्योंकि ये जो हमारे जो माइक्रोबायोम है, अभी जैसे जो बैक्टीरिया, वायरस और जो फंगाई, जो हमारे इम्यून इसके साथ में इतनी क्लोजली रहते हैं, तो हमारे जो इम्यून सिस्टम को ओवरऑल इम्पैक्ट बहुत ज्यादा करता है। So in our gut, this microbiome, there are both good bacteria and bad bacteria, and they compete against each other for resources in the gut. तो हमारे गट में आपके अच्छे बैक्टीरिया भी है और बुरे बैक्टीरिया भी, और इस अच्छे और बुरे में कंटिन्यूअसली 24 घंटे कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, क्योंकि हमारे बॉडी सिस्टम में जो भी रिसोर्सेस हैं उनको लेने के लिए ये अच्छे और बुरे बैक्टीरिया के बीच में कंटिन्यूअस लड़ाई झगड़ा होते रहते हैं। When we're healthy, we have a good balance of good and bad bacteria in the gut, with the good kind of keeping those bad bacteria in check. तो हमारा अगर हेल्दी हैं, हम अगर हेल्थ अच्छे हैं हमारे, तो एक अच्छा बैलेंस रहता है बुरे और खराब और अच्छे बैक्टीरिया के बीच में। उस दौरान में आपके अच्छे बैक्टीरिया का जो मात्रा है शायद बुरे बैक्टीरिया से थोड़ा ज्यादा हो सकता है। But sometimes those bacteria levels can become out of balance when we're neglecting our machine or feeding it bad fuel. कभी कभार जब आप अपने इंजन में खराब चीज खाते हैं या डालते हैं, तब यहाँ पे इस अच्छे और बुरे बैक्टीरिया में काफी इम्बैलेंस हो सकता है। So eating an unhealthy diet creates an environment in the gut where those bad bacteria thrive. तो आप अगर जो खाना कुछ अगर आप ढंग के नहीं खाते हैं, तो जो खराब बैक्टीरिया को बढ़ने का मौका उस एनवायरनमेंट में बहुत अच्छी तरह से मिलता है। On the other hand, eating a healthy, balanced diet with plenty of fiber can support more of that good bacteria and a healthy balance in the gut. तो आप अगर अच्छा खाना, अच्छा फाइबर भरा हुआ खाना आप अगर खाते हैं, तो एक अच्छा बैलेंस रहेगा आपके गट में, और ये जो आपके अच्छे बैक्टीरिया की पॉपुलेशन और ज्यादा हो सकते हैं। So now that you understand how metabolic health, the immune system, and the gut all work together to keep those systems running smoothly, let's talk about how we can further support those systems. अब आपने थोड़े हद तक आप जान चुके हैं ये जो माइक्रोबायोम है, ये जो गट हेल्थ है, जो इम्यून हेल्थ के बारे में आप थोड़ा बहुत आप जान चुके हैं।
अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि ये सारा चीज को हम अगर कैसे रखें और हमारे बॉडी को और आपको हेल्दी और बेहतर हम कैसे बनाएं। The Unicity Clear Start system contains 3 different products that work together to create this powerful system that help the body clear the digestive tract and nourish these good bacteria in your gut. तो ये जो प्ले स्टार्ट किट है ये 3 प्रोडक्ट के कॉम्बिनेशन के हैं और ये बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है और ये आपके जो गट हेल्थ को या फिर जो इम्यून सिस्टम है या फिर जो गट जो माइक्रोबायोम है उसको अच्छा करता है और आपके जो अच्छे बैक्टीरिया को नरिश करता है। These products include a fiber product called Life Fiber, a laxative tea called Nature's Tea, and a product to address intestinal parasites called Paraway Plus. तो आई एम श्योर आप लोग जानते होंगे कि इस पे 3 कंपोनेंट हैं। एक है लाइफ फाइबर जो एक फाइबर प्रोडक्ट है, एक है कीड़े के ऊपर काम करते हैं जिसको आपको पैरावे प्लस बोलते हैं और एक लैक्सेटिव है जिसको हम नेचर्स टी कहते हैं। So these products are taken together for 30 days in a specific program that we'll review a little bit later. तो ये सारा हम आपको थोड़ी देर बाद में बताएंगे। First, I'd like to talk about each product individually and the benefits they provide. मैं सबसे पहले आपके साथ एक-एक प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देना चाहूंगी। Also, please note that you should not use this system if you are nursing or pregnant. तो आप एक चीज ध्यान रखिएगा, आप अगर बच्चे को अगर आप अगर दूध पिला रहे हैं या फिर आप कैरिंग आपको माता है तो ये वाला सिस्टम को यूज नहीं करना है। And you should also consult your physician if you're taking any medication or have any medical condition. Excuse me. और आपके अगर कोई स्पेसिफिक मेडिकल कंडीशंस हैं तो आप को अपने फिजिशियन को जानकारी देना मतलब अच्छा रहेगा कि आप डॉक्टर के साथ इसके बारे में एक बार मिलकर बता सकते हैं। So the first product in the kit is Life Fiber, and this is your daily source of fiber during the cleanse. तो सबसे पहला जो प्रोडक्ट है वो है लाइफ फाइबर। ये आपके गट में जो फाइबर का जो महत्वपूर्ण काम है वो ये आपको मददगार साबित होता है। Fiber is crucial to improving bowel function, which keeps waste and toxins moving through and out of your body. फाइबर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपके बॉडी में जो टॉक्सिक वेस्ट होता है उसको बाउल में आपको सही आपको दिशा देना और आपके बाउल से उसको बाहर निकालने में बहुत कारगर साबित होता है। Fiber can also help you feel full for longer, which is important when you're trying to eat a healthy diet, stay on track with your goals, or lose some weight. आपका कोई अगर स्पेसिफिक गोल है, आप अगर वेट लूज करना चाहते हैं या फिर लंबे समय तक आप अगर अपनी डाइट को कंट्रोल करना चाहते हैं तो ये लाइफ फाइबर आपको एक फुलनेस, एक भरा भरा सा आपको महसूस मतलब आपको महसूस कराता है जब आप ये लेते हैं। What you'll probably notice about Life Fiber is that as you mix it up in a glass with water, if you leave it there for very long, it starts to really thicken. आपने कभी देखा होगा कि आज जब लाइफ फाइबर आप अगर पानी में आप अगर मिक्स करते हैं और आप उसको नहीं पी के आप उसको छोड़ देते हैं वो हार्ड होना या फिर आपको फूल के हार्ड होना शुरू होता है। This is a really important property of this product because that fiber in Life Fiber forms a viscous gel as it moves through your digestive tract. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इसका एक कैरेक्टर है कि ये वैसी काम करता है जैसे एक जेल फॉर्मेशन जैसे आपने देखा है ये वैसी होके आपके पेट के अंदर से काम करते हुए निकल जाता है जेल की तरह। So you can imagine that this acts kind of like a sticky brush as it moves through your intestines, kind of scrubbing the walls of your intestines. तो ये इसी तरह से आप सोच सकते हैं कि आपके इंटेस्टाइन में अंदर में आपके पेट में आंतरियों में ये एक ब्रश की तरह काम करता है, एक जेली ब्रश की तरह काम करता है। अंदर में जितने जो जो गंदगी जो लगा हुआ है वो सतह से उसको निकालते हुए बाहर लेके जाता है। Things in your digestive tract like waste, toxins, and even cholesterol get bound up by this fiber gel as it moves through the system. तो बहुत सारे आपके बॉडी में जो भी वेस्ट होते हैं
वो इसमें बाइंड हो जाते हैं, वो आपको चिपक जाते हैं और वैसे ही आपकी बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। So this is one property. It acts as a scrubber as it moves through your system, but because it's fiber, live fiber is also feeding those good bacteria in the gut. तो ये दो दो टाइप के काम करते हैं। ये खाली आपको खाली साफ करने में आपको मदद आपको करता ही नहीं है, लेकिन ये आपको और एक भी काम करता है। मिस एरिन ग्लेन, इफ यू कैन जस्ट रिपीट दैट सेंटेंस प्लीज, इफ यू डोंट माइंड। Yes. The second part, I'll say, because live fiber is fiber, it's also feeding those good bacteria in your gut. एब्सोल्युटली। सो ये खाली ये फाइबर की तरह काम नहीं करता है, लेकिन ये वो आपके जो अच्छे बैक्टीरिया, जैसे उन्होंने जैसे दिखाए थे बुरे बैक्टीरिया और अच्छे बैक्टीरिया, ये आपके अच्छे बैक्टीरिया को भी ये खाने की तरह आपको काम आता है। तो ये खाना मतलब मैं इसको हिंदी बताऊं तो ये अच्छे बैक्टीरिया के लिए खाना हो सकता है। So we talked about how important keeping that balance of good bacteria in your gut is, and live fiber helps strengthen the good bacteria, nourishing the microbiome. तो ये जैसे इन्होंने बताया था कि ये जो बैलेंस जो है अच्छे बैक्टीरिया और बुरे बैक्टीरिया के बीच में हमें संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। तो लाइव फाइबर ये अच्छा काम करता है कि ये जो आपके अच्छे बैक्टीरिया को ये फीडिंग करने में बहुत कारगर साबित होता है और ये बहुत मदद करता है। आपके जो अच्छे बैक्टीरिया के जो पॉपुलेशन है उसको संतुलित में रखने में लाइव फाइबर बहुत बड़ा काम करता है। The second product in the kit is called Nature's Tea, and this is a really powerful product that helps to stimulate the colon. तो ये जो दूसरा प्रोडक्ट है जिसको कहते हैं नेचर्स टी, ये कोलन को, हमारे जो कोलन को साफ करने में बहुत आपको कारगर साबित होता है। तो बहुत अच्छा तरह से ये काम करता है। So this is a laxative tea, meaning it will make you go to the bathroom. तो ये एक लैक्सेटिव की तरह है। इसका मतलब ये है कि आपको ये पीने के बाद में बाथरूम जाने का बहुत मन करेगा। This is due to one of the main ingredients in the tea called senna leaf, which is known for its laxative properties. तो इसके अंदर में एक इंग्रेडिएंट है जिसको हम कहते हैं सेना लीव्स। तो वो ये जो आपके जो लैक्सेटिव का जो बिहेवियर है उसके माध्यम से आपको लगता है कि मुझे बाउल मूवमेंट हो रहा है और मुझे बाथरूम जाना पड़ेगा। So in this program, you have the live fiber that's moving through your digestive tract, acting like a scrubber to trap and remove that waste. तो आपने अभी देखा इस सिस्टम में, इस प्ले स्टार्ट पैकेज में आपने एक ऐसे सिस्टम को देखा जिसको हम लाइव फाइबर कहते हैं, जो एक स्क्रबर की तरह काम करता है आपकी जितने बॉडी में, जो आपके जो सिस्टम में जो स्क्रबर की तरह काम करता है, जो गंदगी है वो उसको बाहर निकलता है। And then we add nature's tea in the evening after your evening meal to help stimulate the bowels to get rid of that waste that live fiber has helped trap. तो ये बहुत अच्छा एक साइकिल है, एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है कि लाइव फाइबर आपके जितने जो गंदगी है वो उसको ट्रैप करके रखता है, और रात में जब आप खाना खाने के बाद में आपकी जो मील, जो आपकी लास्ट मील होगा, जो आपके डिनर हो सकता है भारत में, लाइक व्हिच इज लास्ट मील, उसके बाद में जब आप ये पीते हैं ये आपको बाउल मूवमेंट कराता है, और ये जो वेस्ट है ये उस वेस्ट को बाहर निकालने में नेचर्स टी बहुत मदद करता है। And lastly, the third product is called Paraway Plus. और जो तीसरा जो आपको प्रोडक्ट है ये है पैरावे प्लस। Now, this product can be a little uncomfortable to talk about, potentially with your customers, because nobody wants to think of parasites living in our bodies. तो ये प्रोडक्ट ऐसा हो सकता है कि शायद आपके कस्टमर्स के साथ में इस प्रोडक्ट के बारे में बात करने में शायद आपको थोड़ी हिचकिचाहट हो, बिकॉज बहुत बार लोगों को कीड़े बॉडी के अंदर में कीड़े के बारे में बात करने में शायद बहुत सारे लोगों के साथ अच्छा ना लगे, या फिर उनको हिचकिचाहट हो कि आप अपने प्रोस्पेक्ट को या फिर आपके कस्टमर को मैं कैसे बताऊं कि आपके बॉडी के अंदर में कीड़े हो सकते हैं। But the truth is, most of us probably have some form of parasite living in our body at some point in our lives. तो कभी ना कभी कहीं ना कहीं हमारे बॉडी में पैरासाइट ये जो जीवित है, मतलब ये जो पैरासाइट्स हैं वो हमारे बॉडी में पाए जाते हैं। These can come from contaminated food or water, and not all parasites that are in our bodies are necessarily harmful.
तो ये जो पैरासाइट्स है आपको कहीं ना कहीं से मतलब कहीं से भी आ सकते हैं, ये मतलब खराब खाने से, पानी से, ये कहीं से भी आ सकते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखने वाली बात ये है कि जो भी पैरासाइट्स हमारे बॉडी में मौजूद है, ऐसा नहीं है कि हर एक पैरासाइट्स जो हमारे बॉडी में है वो हानिकारक हो सकते हैं। So Paraway Plus is not designed to kill parasites. Instead, it makes the environment in your gut unfriendly to the parasites. तो ऐसा नहीं है कि पैरावे प्लस आपके कीड़े को मार देता है, लेकिन पैरावे प्लस उस एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट करता है जहां पे ये जो कीटाणु, ये जो पैरासाइट्स है वो उभर नहीं पाते हैं, या फिर अपना हिंदी में कहते हैं कि अपना जाल नहीं फैला पाते हैं आपके गट में। So when the environment in your gut is no longer friendly to these parasites, they don't want to stay in your gut, and instead they will release and get flushed out of your system. तो आपके अंदर के अगर एनवायरनमेंट, अगर आपके गट का अगर एनवायरनमेंट अगर हेल्दी ना हो इनके लिए, ये जो पैरासाइट के लिए, तो वो क्या करेंगे ज्यादा से ज्यादा, अगर इनको लिए अगर अच्छी जगह नहीं है तो ये आपके गट हेल्थ में नहीं बैठेंगे, तो ये आपको सिस्टम से फ्लश आउट होके बाहर निकल जाएंगे। So key ingredients in this product include an herbal blend, walnut whole powder, wormwood extract, and pumpkin seed powder. इसमें एक वेरी इंपॉर्टेंट कुछ हर्बल एक्सट्रैक्ट्स हैं जिसको हम कहते हैं अखरोट का जो ऊपर का जो बाहर का छिलका है जिसको हम वॉलनट हल पाउडर कहते हैं, वर्मवुड एक्सट्रैक्ट है, पंपकिन सीड्स हैं उनके जो पाउडर है, ये इनके काफी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं। And similar mixtures of several of these herbs have been traditionally used for this purpose for hundreds of years. तो इसी तरह के इंग्रेडिएंट्स मतलब बहुत सारे सालों से हमारे इस चीज को काम करने में इस्तेमाल किया गया है। So as Paraway Plus makes that environment unfriendly to the parasites, they release and they get taken up by that life fiber that's moving through and cleaning out your system. तो जैसे ही अपना पैरावे प्लस अपना जो एनवायरनमेंट है, आपका गट हेल्थ का जो एनवायरनमेंट है, वो उस एनवायरनमेंट को आपको उस पैरासाइट के लिए अच्छा एनवायरनमेंट नहीं बनाता है, मतलब उसको खराब एनवायरनमेंट हो जाता है जहाँ पे वो जो पैरासाइट्स है वो आपको ग्रो नहीं कर सकते हैं, तो क्या हो जाता है, वो आपके सिस्टम से फ्लश आउट हो जाता है। इन द प्रोसेस फ्लश आउट करता कौन है? हमारा जो लाइफ फाइबर, जो हमारा जो साथी है, जो स्क्रबर की तरह काम करता है, वो स्क्रबर की तरह जो काम कर रहा है, ये जो पैरासाइट्स हैं जो पैरावे प्लस के माध्यम से ये जो कभी उभर नहीं पाते हैं, फल फूल नहीं पाते वहां पे, वो वहां से बाहर आपको ढकेले जाते हैं या फिर बाहर निकाल दिया जाता है। So we talked about how metabolic health encompasses all of the body's systems working together like the parts of a car. तो अभी जैसे हमने आपके साथ कंपेयर की हमारी बॉडी और हमारी गाड़ी जो हम चलाते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में, and how gut health and immune health are connected through the microbiome. और ये माइक्रोबायोम कैसे आपके गट हेल्थ और इम्यून हेल्थ को आपको बांधे रखता है। We know that maintaining our metabolic health is critical, as we've seen in the case of COVID-19 and the higher risks associated with poor metabolic health. तो आपने अभी देखा होगा मेटाबॉलिक हेल्थ इतना बड़ा रोल प्ले करता है, जैसे अभी जो हम कोविड से हम गुजर रहे हैं या फिर हम जो बहुत सारे लोग जो गुजर चुके हैं अभी, मेटाबॉलिक हेल्थ एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपको इवन इस पेंडेमिक में। So I don't want you to think about only ever supporting one system. You shouldn't be thinking right now, I only want to support my immune system. आपको अभी खाली एक ही चीज ध्यान नहीं रखना है कि मुझे खाली मेरे इम्यून सिस्टम को ही ध्यान रखना है, बाकी चीज को मुझे ध्यान नहीं रखना है। For proper metabolic and overall health, we need to always be thinking about supporting the whole organism. तो हमें अगर हमारे पूरे बॉडी को अगर अच्छी तरह से अगर रखना है तो खाली एक ही सिस्टम, जो हम इम्यून सिस्टम को ही ध्यान रखना इंपॉर्टेंट नहीं, हमारे पूरे बॉडी को कैसे हम ढंग से ध्यान रखें और हेल्दी रहे, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, और वही चीज हमें ध्यान रखनी है। The three products in Unicity Clear Start form a powerful combination that help reset your body's systems when you take them as directed. तो ये जो हमारा जो प्रोडक्ट है क्लियर स्टार्ट किट,
ये आपको एक ऐसा सिस्टम आपको प्रदान करता है जहाँ पे आप अपने मेटाबॉलिक हेल्थ को आप सही कर सके और अपने हेल्थ को आप बहुत अच्छी तरह से आगे लेके आ सके. So let's look at how the program works and the recommended directions for taking the products. तो अब हम देखते हैं कि इसको कैसे लिया जाए और मतलब लेने की प्रक्रिया क्या है. Clear Start comes with the 3 products and you're consuming all 3 of those for 30 days. तो ये 3 जो प्रोडक्ट आपके साथ अभी इसके स्टार्ट किट में आते हैं वो आपको 30 दिन तक लेना पड़ता है. इसका मतलब 1 महीने तक लेने पड़ते हैं. Paraway Plus is going to be taken in the morning before breakfast for the first 10 days. तो पैरावे प्लस पहले 10 दिन तक सुबह नाश्ते से पहले 3 टैबलेट आपको या 3 गोली आपको लेनी है बिफोर ब्रेकफास्ट. And so you're taking 3 capsules of Paraway Plus in the morning for the first 10 days. तो पहले 10 दिन तक सुबह आपको 3 गोलियां पैरावे प्लस की लेने हैं. After 10 days, you're going to double that. So you take 3 capsules before breakfast and then 3 capsules again in the evening. तो 11वें दिन से आपको वो 3 टैबलेट को डबल कर देना है. सुबह 3 लेने हैं बिफोर ब्रेकफास्ट और 3 रात को 3 कैप्सूल्स और लेने हैं. ये आपको 11वें दिन से लेके 30वें दिन तक है. Live fiber is also going to be taken every day, preferably before a meal. लाइव फाइबर भी हो सके तो कोई एक खाना जब आप खाते हैं तो उससे पहले ले लीजिएगा. And it's really important during this program to stay hydrated. So we recommend drinking at least 8 to 10 glasses of filtered water every day. तो इस प्रोग्राम के दौरान ये जो 30 दिन के प्रोग्राम के दौरान हम आपको रेकमेंड करते हैं कि अपने बॉडी को हाइड्रेटेड रखें और हो सके तो 8 से 10 ग्लास फिल्टर्ड पानी जरूर पीजिएगा. This is important to help the body flush out everything that we're pushing through the system. इससे बहुत बड़ा एक काम होता है आपके बॉडी से जो जो अनवांटेड जो वेस्ट है इसको भी निकालने में बहुत कारगर होता है जब आप ये 8 से 10 ग्लास पानी रोज पीते हैं. And the last part of the system is enjoying a cup of nature's tea every evening after your evening meal. और रात को खाना खाने के बाद में 1 कप नेचर्स टी एंजॉय करते हुए पीजिएगा जरूर. Now, the directions on nature's tea say to steep it for 3 to 5 minutes and drink immediately. तो जो डायरेक्शन दिया गया है वो जो डिप के ऊपर में उसको आप स्टीप कीजिएगा 3 से 5 मिनट तक. If you have someone who is maybe a little bit sensitive and maybe you want to reduce how strong the effects are, you can steep it for less time. तो आपके लोगों में या कस्टमर या प्रॉस्पेक्ट आपने किसी को दिया है और उनको अगर काफी स्ट्रांग लग रहा है तो आप जो हम कहते हैं कि 3 से 5 मिनट तक आपको स्टीप करके रखेगा उसको थोड़े कम समय तक आप स्टीप कर सकते हैं. So similar to a tune-up or that regular maintenance that you should do on a car or machine, we recommend using the Clear Start program every 3 to 6 months. तो जैसे हम अपने गाड़ी को ध्यान रखते हैं, मेंटेन करते हैं, सर्विस स्टेशन लेके जाते हैं, तो हम आपको रेकमेंड करते हैं हो सके तो एटलीस्ट 3 से 6 महीने में हर एक 3 या 6 महीने में क्लियर स्टार्ट किट के माध्यम से अपने गाड़ी अपने जिसकी कोई कीमत नहीं है आपकी बॉडी की. देयर इज नो आपको लिमिट इन टर्म्स ऑफ प्राइस जो कोई नहीं है उसको आप प्लीज ध्यान जरूर रखिएगा. So we don't recommend doing this too much more than that because this really is a maintenance. It's not something that should be done continuously or taken every day. तो ये हम आपको एक प्रोग्राम की तरह हम रेकमेंड करते हैं. ये एक ऐसा चीज नहीं है जो आप बार बार लगातार करें इसको क्योंकि ये एक मेंटेनेंस प्रक्रिया है. तो हम मेंटेनेंस के माध्यम से 3 से 6 महीने में एक बार पूरे 30 डेज के लिए ये एक मेंटेनेंस की तरह हम चाहते हैं कि आप लोग इस रूटीन को जरूर फॉलो कीजिए. So if you've tried this system, I'm sure you've experienced this, but you will feel lighter and more refreshed after taking this system for 30 days.
तो आपने अगर इस सिस्टम को जो हम क्लियर स्टार्ट किट कहते हैं, अगर इसको इस्तेमाल किया होगा तो मुझे ज़रूर लगता है कि आपको बहुत हल्का महसूस किया होगा और बहुत अच्छा फ्रेश महसूस आपको ज़रूर हुआ होगा। And as you're cleaning out all of that old waste that's been stuck in your system, this also, excuse me, allows your digestive system to function better. तो इस सिस्टम के माध्यम से ना ही हम हमारे पूरे जो गट हेल्थ को हम साफ करते हैं, बट इन द प्रोसेस आप हमारे जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जो हो रहा है उसको हम अच्छी तरह से मेंटेन कर सकते हैं। So, what do I mean by function better? तो ये फंक्शन बेटर का मतलब क्या है? Well, one way it functions better is it allows for better nutrient absorption from the foods and supplements you take. तो एक है कि आप जो भी फूड सप्लीमेंट्स या न्यूट्रिशन आप जो भी अगर खा रहे हैं तो बॉडी में एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छे लेवल पे होता है। You'll also notice that you just process food better. You have less digestive issues after you go through a cycle of the clear start. तो आपको बहुत सारा ऐसा चीज़ दिखाई देगा कि यार मेरा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है बहुत अच्छा हो गया है, बहुत स्मूथ हो गया। जो मैं अगर मेरी जो पाचन क्रिया है, जो मेरी जो डाइजेस्टिव एबिलिटी है, वो बढ़ गया है। Performing this routine maintenance on your system, on your body, will help you maintain a healthy microbiome, immune system, and metabolism. तो हम अगर इस सिस्टम को जो हम स्टार्ट किट कहते हैं, हम इसको अगर रेगुलर यूज़ में लेके आते हैं तो आपका ओवरऑल माइक्रोबायोम अच्छा हो जाता है, आपकी हेल्थ अच्छी होती है, आपकी गट आपको अच्छा होता है, देन ओवरऑल आपका सिस्टम बेहतर होने लगता है। So that's all I have for you this evening on the Clear Start Kit. I hope that you've learned something new or maybe new way to talk about the products to your customers. सो आज मेरे यहाँ तक ही मैं आपको सीमित रखती हूँ और मुझे लगता है होप कि आपने कुछ नया सीखा होगा और शायद आप इससे कुछ कुछ एक नया इन्फॉर्मेशन आपको मिला होगा। And certainly, if you have any questions, please direct those through your office there, and I will help answer any questions that I can. तो अगर इसको लेके कुछ भी अगर सवाल है तो इंडिया ऑफिस में आप ईमेल कर सकते हैं एंड डॉक्टर एरिन ग्लिन जितना हो सकता है उस आंसर मतलब उस क्वेश्चन को आंसर करने की पूरी जद्दोजहद करेंगे। Thank you so much for having me. Thank you.